Let's start the presentation. So, education and smart working is the focus, potential areas that we have picked up for today's discussion. Uh, we will do lot of case studies, lot of day-to-day stuff that you handle, because the intention is to make you savvy and make you aware as to what is transforming with AI, how it is transforming, and what it is taking away from you. Right. So let's look at the AI for education, which is the core purpose. That is, I make I look at education in two arms. First is learning, and another is assessments. Okay. So learning, by learning I mean actual learning of concepts, communication, creativity. Okay, and when we look at learning, we look at things like technical literature, summarization of PDFs, language improvements, charts, graphs, and videos. Okay, so these are certain areas that a student generally spends his or her time on learning. And when it comes to assessment, students obviously want a lot of feedback in the form of MCQs, in the form of what they have understood, whether they have understood it correctly or not. They need to also solve a lot of questions and answers. They need a lot of suggestions as to what to read, how to read, when to read. They want to do planning and scheduling of their time, which is less in their hands, and there is always more to do. Then they want to uh, read, generate, and analyze essays, large write-ups, and ultimately they need to also do a lot of applications. For example, when we learn costing, we have to put those concepts of costing into work and solve real life issues with the costing. If we know accounting, we need to solve real life issues with accounting. If we know chemistry, geography, biology, medicine, we need to solve real life issues with the help of those aspects that we have learned, right? So it is always like connecting the real life problems with the education. And as you grow bigger, as you enhance in your career, the more the applicativeness of knowledge comes in. So it is not only just learning things, but it is also applying them on day-to-day basis. That is the core, or you can say the heart of learning, right? So we can say that we are trying to link these technical concepts and summaries to the applications. That is the real life problems that we want to solve with the help of those learnings, right? So that is the whole idea. And as you grow bigger, that is, as you graduate from being a normal graduate to a postgraduate to a master's to a professional, the quality of learning even requires more and more sharpness and applicativeness. So that is the idea. Okay, so how we can actually use AI to evolve and ensure that whatever we do is actually put to use, and we are maximizing our learning curve with the help of applicativeness, right? So how many of you here, I would like to quickly pause and ask this question: how many of you have actually used AI in their education, and what are the use cases, and which of these aspects have you touched while doing the education and used your AI skills while doing the education? Yes. Okay, anyone has used AI for actual education? Yes, Trisha has used. What have you done? Can you give some examples?
Okay. Anyone else has used AI for their actual learning? Okay, Tanmay. Great, great. So we will take some real life examples. Yes, sorry. So we are trying to see how AI can be used for various things in education. Okay, so we can quickly look at few of the aspects like let's go to ChatGPT. That is something that everyone is doing right today. So when you look at various aspects of AI, let's look at one or two. Like for example, someone may ask this question that I am a student, I am a CA student, okay, and I am say weak in you the specific you give the specification you give the specific answers it will throw. So okay, so we will say I am weak in say costing, and I am not sure whether I Sir, the uh, screen is not visible, sir. okay, okay, I will again reshare it. Are you able to see the screen now? Yes. Yes, sir. Okay, so I will go to this and I will give a command. I will say I will give a prompt. Okay, so this is called as prompt. So I am weak in costing, right? So we'll just ask ChatGPT, can you give me a 10 days program for learning costing all throughout the day, right? So now it is also knowing what are your subjects in costing, sorry, what are your topics in the costing, and also finding out uh, the issues with respect to uh, your timings, and also helping you and telling that what all you need to do in these 10 days, right? So these are certain specific questions. Here the problem is sometimes the data needs to be properly fed into the system. For example, I did one exercise which I will share later. Let's see what answer it is giving in the meanwhile. See, it is saying morning 3 hours, afternoon 3 hours, what all you need to study. Labor costing, overheads, activity based costing and job costing डे 5 में पढ़ो, डे 6 में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ो, डे 7 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस पढ़ो, डे 8 में मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग पढ़ो. This is exactly what I was telling students when we were talking about mission first attempt. This is something which we keep on doing for CA students who are joining final to help them do the planning, right? Now it is also giving you a lot of additional tips. It is saying that active learning, practice and rest is required. You have to do active learning, that is summarizing your own in your own words, teaching them to someone else. Actually, if you teach, you learn more. That is what it is trying to say. It is also trying to say that solve as many problems as you can, especially from past CA exams, to familiarize yourselves with the exam format and question types and ensure you
get adequate rest and breaks to avoid burnouts. Your brain needs time to assimilate information. तो ये आपको रोज का प्लान बना के दे रहा है, रोज अराउंड 10 घंटे का 8 घंटे का प्रोग्राम बना के दे रहा है, किसी किसी दिन 9 घंटे का बना रहा है, बट जनरली इट इज telling to do 8 hours study daily, and it is also giving you the breakup. That means it knows what are the concepts that you need to learn, and also it knows how you need to plan and learn for clearing this complicated examination. It may be right or wrong, but I'm trying to just tell you that it can throw a lot of information which is useful. Sometimes it is wrong, so you have to feed it with your textbook or your data, basic data, that is their PDF. Let's take this example now quickly, where I have fed, I am using one more chat engine. Okay, those who don't know Chat GPT, it is as simple as configuring it and signing it up with OpenAI, right? So log into OpenAI, sign up for Chat GPT and start asking questions. I have asked so many questions to Chat GPT, and it does amazing job of giving me right answers or useful answers for working on various things like audit programs, like writing IFRS, replying to IFRS queries, doing data analytics, writing presentations, PowerPoints, summarizing things, connecting it with softwares like Canva and making social media posts. Multiple types of examples I've already gone into, like drawing scenes which I couldn't have any time drawn in my life, but I wanted to make it for some presentation or the other. Uh, Doing a lot of stuff which I couldn't have done without AI, or I would have taken hours and hours to do the same thing, right? So this is one example to write the study plan or making a study plan for costing. This is one example, right? ऐसे ही आप 30 दिन का प्लान लिख सकते हैं, 1 दिन का लिख सकते हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 5 घंटे का लिख सकते हैं. Similarly, when our team was traveling to Delhi for an audit of an iron and steel unit, I was asked by the team, सर हम लोग वहां जाके क्या करें? What is our daily plan for 4 days? So I thought I can prepare the plan, but let me ask what is the answer that ChatGPT is giving for preparing the plan. And it actually nicely prepared plan for 4 days for 4 people, how they will work, what areas they will cover, what questions they will ask, whom they will approach in the plant, and how they will create the questionnaire. Super, right? So that is the kind of work that an AI can do for you. So basically, an AI is assimilation of all the thoughts and ideas and knowledge from the internet, customized to your questions or issues, and giving straight answers to your problems, right? So let's look at one example where I summarize the PDF. You can also summarize various PDFs. I'm seeing that more and more students are now using PDFs to learn their topics and concepts, because it is becoming easier to carry PDFs vis-a-vis carrying notebooks, textbooks, and stuff like that. So let's look at one thing that I did with Bing Chat. Okay, so like Chat GPT, there is another very powerful tool called as Bing Chat, which is set up on your Microsoft Edge browser. Uh, are you able to see this screen? This is a small PDF that is guideline of networking in Indian CA firms. I was actually conducting a session the other day in a study circle in Sindhudurg district in a place called as Kudal on this topic, and I had to summarize this entire book for the crowd there in 1.5 hours. So I had two options. One is to read this entire book and summarize it by myself. मेरे हिसाब से मैं इसको summarize करूं. दूसरा था using an AI to summarize it smartly and make it available. So I use this something called as Copilot. You can see in the corner of Bing
browser. And have you ever used Bing browser? कितने लोगों ने Bing browser यूज किया? चलो 1 मिनट के लिए पॉल लेते हैं सबका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. Come on guys, how many of you have ever used Bing browser? Dhruv बोल रहा है yes, not yet. Anyone else has used Bing browser? Rohan, yes. Okay. Tanmay, no. Prachi, never used it. Okay. Okay. तो यदि आपने एज ब्राउजर यूज नहीं किया है तो इट इज एज सेम एज your Microsoft, sorry, your Internet Explorer for the old people. Maximum of us would have used Internet Explorer in past. So we can use in the same manner the Edge browser. Okay. And if we have not used the Edge browser, it is as easy as downloading it and setting it up and make it start using the Copilot on the Bing, or you can say the Edge browser. Let's look at what I did with the Edge browser and the Copilot. Okay, this is a case study. Are you able to see the book, the PDF? Now I have to just click on the right hand side corner. You can see this blue color icon here. Just click here. It will open the Bing browser. And we will be able to actually, just give me 1 second. Some issue with the content, it seems. It was actually able to do the chat. This content. I actually did the analysis of this this PDF in a nice manner with the same browser, but now it is showing some issue. Maybe some temporary settings that we have not done correctly. Or I temporarily change the settings. Now it is throwing. Okay. So, okay. So now you can go to this, and this is a large book. Uday bhai and all of you would appreciate the chartered accountants. ऐसे ही आपका costing, accounting and all these books are there, right? So I can just say summarize this PDF in 5 pointers for a CA firm to understand. Now this will read the entire PDF and help us do a quick summarization of what we are understanding from this PDF or the book. Similarly, you can do it for costing, chemistry, biology, law, whatever subject, right? Now, see, this has started throwing information to you. It's saying that there are 3 models of networking: alliance, network, and lead firm. We are talking about this PDF talks about the procedure and criteria, accountability and responsibility. It is also highlighting the things that you should read. That is, it is making them bold for you to quickly understand. इतने अच्छी तरीके से इसने 5 पॉइंटर्स में पूरा बुक समराइज करके दे दिया है. आर यू एबल टू सी इट? ठीक है. नाउ it is prompting you to ask questions like what is Institute of Chartered Accountants of India, but इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे पास है. How many CA firms are there in India? What are the some benefits and limitations of networking? This is a good question, but I want to ask, elaborate about the 3 options of networking.
within the CA firms and give their pros and cons. आपको सिंपल इंग्लिश में प्रश्न पूछना है और आपको एक बहुत ही स्पष्ट जवाब इससे मिलेगा. देखिए, अलायंस मॉडल्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, नेटवर्किंग मॉडल के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और तीसरे वाले जो मॉडल है विदाउट लीड फॉर्म और विथ लीड फॉर्म वाले नेटवर्किंग मॉडल के क्या प्रोज एंड कॉन्स है. Sorry, something went wrong. That is why it removed the entire thing. But I hope you got the point. It is basically trying to help you do the analysis of any kind of PDF documents. Now, this can be used for analyzing websites or analyzing PDFs or Word documents, or also doing what you call analysis and FAQs on the data that you have. For example, whether I have really understood the concepts of networking or not, I'm now jumping on to the assessment point, okay, of the networking guidelines. I can make and FAQ or MCQs, make say 5 MCQs to assess whether the audience have understood the concepts of networking in the CA firms, right? So मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये PDF में से लोगों ने क्या समझा या नहीं समझा है, इसका असेसमेंट करने के लिए मुझे MCQs लिख के दो, ठीक है. और वो कितने MCQs चाहिए? सिर्फ 5. MCQs मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट? तो आप ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने लिए बना सकते हो अपने PDF में से, और उन क्वेश्चंस के आधार पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको विषय समझ में आया है या नहीं समझ में आया. देखिए, MCQs भी बना रहा है और उसके आंसर भी यहाँ पे दे रहा है यहाँ पे, लेकिन उसने दूसरे प्रकार के MCQs बना दिए. उसने नेटवर्किंग विद इन कंप्यूटर्स के MCQs बना दिए. तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां होने की संभावना इसके अंदर होती है. So we have to specifically tell it that we are wanting MCQs on the PDF that is on the side, right? So summarize the PDF. पहले उसको फिर से summarize करवाना पड़ेगा जो कि डिलीट हो गया, एंड फिर उसको बोलना पड़ेगा कि इसके MCQs आप बना के दीजिए on the networking guidelines, and then it will give me the MCQs or questions and answers that you want to generate from these MCQs. Okay, so this gives a idea. Is this useful for most of us who are trying to do studies with the help of yeah, it can write test papers also. It can also check your performance evaluation. That is what we are saying, right, in the PDF in my presentation. So it can actually help students do concepts, communication, creativity, technical literature, summarization, language improvement, charts and graphs. It also helps to prepare MCQs, feedbacks, suggestions, essays, and applications. How we will use these concepts on day-to-day basis. ये सारे काम जो है वो आसानी से करके दे सकता है आपको. तो ये from technical literature to application, इन सारे बातों में if you ask it right questions, it will give you correct answers, and it will help you what you call understand and know more about everything related to the learning that you have tried to acquire. Similarly, in case of English, so one of the things that AI can transform in education is it can help
गिविंग लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीवन एंड एनीवन। पहले ऐसा हुआ करता था हमारे समय में कि पीपल वर रिक्वायर्ड टू हैव मनी टू बाय high profile tuitions and classes to, and people who will not have this would not be able to reach at the top, right? So this was a discrimination to the people who had money vis-a-vis those who didn't have money and resources. It was a discrimination between people who had who stayed in cities and who stayed in villages. So there was a lot of discrimination and education was selectively available to people. Now with the help of tools like ChatGPT or Edge being chat, it is becoming very available and simple for anyone to use and access and take advantage of, right? तो मल्टीपल लोगों तक एजुकेशन पहुंच सकता है यदि इसके थ्रू हम लोगों ने इसको यूज किया तो देन पीपल कैन बिकम मोर एंड मोर क्लेवरर एंड कैन ग्रो एंड यूज and develop themselves into various skill sets and abilities with the help of these tools. So we can look at ChatGPT or any other tool as killer for education and see that people will do all copy paste and not use their brains at all. And we can also use ChatGPT to develop and evolve our brains in right direction, also do assessments, tests, and also prepare essays, write-ups, summarizations of PDFs for us, and make our learning at a faster pace and easier methodology. तो आप कैसे देखते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसका कैसा उपयोग या दुरुपयोग करेंगे। ठीक है, it can help you solve lot of questions. I will show one possibility of what a chat gpt can do with the help of its plugins. Of course this is a paid version of chat gpt, so we can just look at explore chat gpt and we can see it can do, it can generate images, it can make Canva blog, what you call posters, it can create logos, it can write articles for you, it can prepare cartoons, it can uh, find out the consensus of the research that you have done, it can do lot of work on images, it can do lot of work on writing, productivity, research and analysis. It also can do a lot of work on technology, like Uday was talking about program and compilation and Python and coding. It can do a lot of work on coding. It can do a lot of work on education. देखो एक education के लिए पूरा ये दिया हुआ है, what you call छोटा सा एप्लीकेशन बेस दिया हुआ है जहाँ पे आपको ट्यूटर, यूनिवर्सल प्रीमियर, ये सारे मैथ सॉल्वर, अल्फा नोट्स, कोड ट्यूटर, ट्यूटर मी, ऐसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट प्रोफेसर एंड सो ऑन, लॉट ऑफ दीज डेटा एनालिटिक्स, मैथ्स, एआई, ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको एड इन के तौर पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आई विल शो यू सम इमेजेस दैट वी क्रिएटेड फ्रॉम दिस टूल और वी मेड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिसेंटली, राइट? ये जो आप पावर पॉइंट देख रहे हैं वो हम लोगों ने चैट जीपीटी से बनाया है। कैन यू इमेजिन, आई जस्ट गेव इट एन ए प्रॉम्प्ट सेइंग दैट आई वांट टू राइट अ वीबीए कोड फॉर मेकिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर एआई रिवॉल्यूशनाइजिंग एजुकेशन। एआई से एजुकेशन कैसे रिवॉल्यूशनाइज होगा इसके बारे में मुझे एक पावर पॉइंट बनाना है। यू हैव टू फिल इन द टेक्स्ट ऑन योर ओन, आपको खुद ही टेक्स्ट लिखना है और कोई प्लेस होल्डर नहीं डालना है। आई वॉन्ट 5 स्लाइड्स प्रेजेंटेशन, मुझे कितना स्लाइड चाहिए? मुझे 5 स्लाइड का प्रेजेंटेशन चाहिए। और देखिए उसने मुझे 5 स्लाइड का प्रेजेंटेशन यहाँ पे बना के दे दिया। आई विल जस्ट शो यू दिस प्रेजेंटेशन which I created with the help of AI. I cleaned it up a bit. See. Are you able to see this presentation, guys?
Are you able Yes, to see? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए कितना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बना है. बस 5 स्लाइड का प्रेजेंटेशन. Are you finding logic? AI's roles in personalized learning. Through adaptive learning algorithms, AI can analyze learning patterns, customize material, making education more accessible and inclusive. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा काम करने के लिए. ठीक है. सो इस तरह से एआई जो है वो अपने आप ये पूरा प्रेजेंटेशन बना के दे सकता है. एनीवन ट्राइड दिस बिफोर? Anyone prepared any presentations with AI before? आप इतने स्मार्ट लगोगे अपने बॉस के सामने की बात मत पूछो यदि आपने ये करके दिखा दिया. ठीक है. So I will quickly tell you how it can do, right? So I wrote this code. You saw that? Yeah, make some changes. Of course, you have to make some changes. You are human beings, so you have to apply your mind. But as I told you, this is a quick prompt that I gave to AI. आपको दिख रहा है prompt? मैं आपको quickly steps बता देता हूँ. फिर डिटेल में जाना है तो we can go afterwards. VBA कोड लिखना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए. ठीक है. तो इसने ये VBA कोड बना करके दे दिया. इस VBA कोड को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी उसने बताया. गो टू पावर पॉइंट, प्रेस Alt F11 टू ओपन द VBA एडिटर. इंसर्ट मॉड्यूल पे जा करके एक नया मॉड्यूल क्रिएट कीजिए एंड कॉपी पेस्ट दिस VBA कंटेंट. ये VBA का कंटेंट आप सिर्फ उसमें पेस्ट कर दीजिए और इस मैक्रो को क्लोज करके रन कीजिए. तो Alt F8 से भी आप रन कर सकते हैं. देखिए शॉर्टकट भी दे रहा है आपको. ठीक है. सो टेक्नोलॉजी में इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है क्या? Could anyone imagine that AI can write a entire PowerPoint presentation along with the content? You have to just give one line to it. Right. So lot of capabilities are there. I will show you one or two capabilities in Excel. Anyone has used AI in Excel? Excuse me, sir. Sorry. I have a query. Can I post it now or should I post it later? Yeah, you post it on the chat box. Okay, I'll do that, sir. Thank you. Okay, so let's look at a change in Excel, a quick one. Anyone tried AI in Excel? No one? Okay, no problem. So I will show you one thing where you can ask questions to Excel instead of actually typing or making any what you call pivot tables or making any pivot charts or doing any power pivot. Just ask some questions and you will get some answers from Excel. Let me quickly show you. Now Microsoft is actually introducing Copilot in all the office tools, and this is going to come very, very soon. But in the meanwhile, the Excel has already started doing something in analytics, which I would want to show you. Let's open this book. Let's see. Okay, so this is some data of payroll. I can analyze this data since it is a significantly important data. I'm not showing the names, etc. But we can click on analyze, and we can actually analyze this entire sheet. Sir, the screen is not refreshing. I think, yeah, we got it. You can just click here on analyze. Go to home
go to analyze. Only thing is you need a latest version of Office 365. Okay, पुराने version में हो सकता है ये ना चले. And I am using a Mac, so sometimes in the Mac the placement of the icons can be different. So you can go to analyze here, and in analyze you click and this window will appear. ये आपका सारा डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको मदद करेगा. आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ सवाल पूछना है. आपको सवाल का भी प्रॉम्प्ट करके देगा. टोटल ऑफ मेडिकल अलाउंस, देखिए वो मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करके दे रहा है आपको कि कितना आपने मेडिकल अलाउंस में खर्चा किया है. और फिर टोटल ऑफ एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन, देखो आपको सारा पीएफ आर्टिकल्स का, एसोसिएट्स का, सीनियर एसोसिएट्स का और इनका सभी का मिला के कितना पीएफ आ रहा है ये कैलकुलेट करके दे रहा है. आप सिर्फ इधर से इंसर्ट पिवट टेबल करोगे तो वो आपको सारे कैलकुलेशन 99,000 जो पीएफ भरना है इस महीने में, जिस महीने की ये पेरोल है, इसका सारा कैलकुलेशन बना के रेडीमेड दे रहा है. आर यू विथ मी? ये एनालाइज फंक्शन में आप कुछ भी क्वेश्चन एक्सेल को पूछ सकते हो, राइट. फॉर एग्जांपल आई विल आस्क टोटल डिडक्शन को मुझे सम करके दो कि टोटल डिडक्शन आप मुझे कैटेगरी वाइज फॉर डिपार्टमेंट्स निकाल के दो. तो ये सारे डिपार्टमेंट वाइज मुझे डिडक्शंस निकाल करके दे देगा. और इसका पाइवट चार्ट चाहिए तो पाइवट चार्ट भी मुझे डालने देगा. आर यू विथ मी गाइस? देख रहे हैं? Yes, sir. Okay, so these are small things which you can, now AI is coming in real life. It is coming inside your applications, inside the way you operate, inside your WhatsApp. Soon you will see AI. Inside your LinkedIn, you are already seeing AI. Inside your Instagram, you are already seeing AI. तो आप बहुत स्मार्ट हो सकते हो in wherever you are, whatever you do. Mission first attempt is our logo, and that is where we are trying to achieve, help CS students to become smarter with what they do, how they do things. And at the same time, I feel in the office environments, people should change the way of working and make it better and better for themselves and for their main benefits: no mood swings, no boredom, improved quality of drafting, speed of content creation, ideas to think through, correct tone and communication, and predictability. Now, my last question to all of you. I know you are feeling a bit awkward when I am asking a lot of questions and wanting you to put it in the chat box. But this is one of my last questions. That what do you think? So everyone has AI, right? Everyone has Chat GPT, everyone has Bing Chat, everyone has Bard or now Gemini. But what is the differentiator between you and Mitesh and Mehul and Sunita and Uday and Gerald, Krishna and Tanaya? What is the difference? सबके पास AI है, तो कोई अच्छा है कोई बुरा ऐसा रहेगा ही नहीं, सब लोग सेम हो जाएंगे, राइट? और you think that there will still be a difference between one versus the other? Come on, tell me, do you think everyone will be same or everyone will still be? कोई बोल रहा है thinking skills. Supriya Sangvi is saying thinking skills. Do you think you will be same or different? Yes or no में आंसर दो. सेम है तो yes बोलो, different है तो no बोलो. Yes, different, no, okay, no. So what is that difference? How will that difference evolve? वो सटल डिफरेंस क्या है जो सबके पास एआई होने के बावजूद एक और दूसरा अलग है? क्या है वो? What is that subtle difference between people when everyone will have same AI? What will be different?
Yes, perfect. Tanay is right. He's saying the difference is the way we give the command. It is called as prompt engineering. So I will quickly take you through what are the concepts of prompt engineering. यदि किसी को आज गिफ्ट देना है, फर्स्ट प्राइज देना है, तो तने को देना पड़ेगा. उसने काफी सारे उत्तर सही तरह से दिए. व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव. अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने ध्येय को ठीक से समझिए और समझाइए. कीप इट सिंपल. बी स्पेसिफिक. आइट्रेट एंड रिफाइन. अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस को अवॉइड कीजिए. और टेस्ट मल्टीपल वेरिएशंस. बहुत सारे वेरिएशंस ट्राई कीजिए. ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट आंसर इज द बेस्ट आंसर. लीडिंग क्वेश्चंस मत पूछिए. ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए जिससे एआई को उत्तर हाँ ही देना पड़े या ना ही देना पड़े. आइट्रेट कीजिए. अपने प्रश्न को ठीक से लिखिए, फिर से लिखिए, फिर से ठीक से लिखिए. बी स्पेसिफिक. प्रॉम्प्ट लिखने के ये आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेने लायक स्लाइड है, जहां पर आपको एक्सपर्ट पर्सोना ड्रॉ करना है, बताना है एआई को. लेंथ बतानी है कितना लंबा. जैसे मैंने बताया 5 स्लाइड में उत्तर दीजिए. टास्क एंड ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए. रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पर्पस दीजिए. टोन एंड स्टाइल दीजिए. एंड इंक्लूड माई इंफॉर्मेशन पॉइंट्स गिवन बिलो. यहाँ पे एक्सपर्ट पर्सोना में आप लिखिए एंटरप्रेन्योर हो, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट हो, सीएफओ, सीईओ हो, क्या हो. वर्ब्स दीजिए. फाइंड, इम्प्रूव, डेवलप. आउटपुट दीजिए ठीक से. टोन दीजिए और स्टाइल दीजिए. ये 2 स्लाइड्स जो है वो आपके 3 स्लाइड्स जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. प्रॉम्प्ट लिखने की पद्धति. कुछ ऑप्शंस जो पर्सोना फॉर्म करने के लिए चाहिए, कुछ ऑप्शंस जो वर्ब या कमांड के लिए चाहिए, आउटपुट के लिए चाहिए, टोन के लिए चाहिए, स्टाइल के लिए चाहिए. और ऑडियंस डिफाइन कीजिए. किसके लिए आप लिख रहे हैं, किस बारे में लिख रहे हैं, उसको ठीक से डिफाइन कीजिए. इतना करने से द क्वालिटी ऑफ आंसर्स विल बी वेरी वेरी हाई एंड इम्प्रूव्ड. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. दिस वी एनीवेज डिस्कस्ड. ये सारे अभी एजुकेशन के मोड चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं. तो प्लीज एक्सप्लोर दोस. वन थिंग प्लीज अवॉइड is plagiarism, copy pasting, thoughtless prompting, defying application of mind just for the sake of doing things. ये अवॉइड कीजिए. इन सारी चीजों को आपके फेवर में यूज कीजिए, आपके अगेंस्ट में यूज मत कीजिए. ठीक है. प्रॉम्प्टिंग आइडियाज टू एआई. शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग एक पद्धति है जहां पे मैंने एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट दिया. शॉर्ट मतलब एक शॉर्ट मारा. मैंने कहा कि एआई और एजुकेशन के बारे में एक पीपीटी बनाओ. ये शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग हुआ. चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, जहां पे मैंने मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स दिए और एआई को डिफाइन करते गया क्या चाहिए आउटपुट में. और इन तीसरे केस में मैंने इन स्टाइल प्रॉम्प्टिंग, मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन जी की तरह से इस कविता को लिखो. Do you know the GPT can now write poems as well? So you can actually prompt what style you want in a para or a poem or a dialogue. तो ये सारे important, जैसे सीईओ के स्टाइल में आप एक ईमेल लिखिए, सीएफओ के स्टाइल में ईमेल लिखिए, तो वो स्पेसिफिक स्टाइल को अडॉप्ट करके लिखेगा. चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम टाइम यूज में आती है. आई विल गिव यू वन क्विक एग्जांपल बिफोर वी वाइंड अप द सेशन. In case of chain of thought prompting, I was making article on the lean startup, one of the startup books which I love and have been reading for a while. उसके अंदर मुझे एक आर्टिकल लिखना था लिंक्डइन पे, तो मैंने मल्टीपल सवाल पूछ करके उसको डिफाइन किया और एक आर्टिकल बनाया. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड द लीन स्टार्टअप. हाँ, मिल गया. तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीपल सवाल पूछे. एक बात ध्यान में रखिए, इफ यू आर यूजिंग फ्री चैट जीपीटी, you will be able to only go up to 5 to 8 prompts. जब तक जीपीटी आपकी बातों को याद रख के एक सीक्वेंस में डेवलप करेगा. लेकिन आप अगर ये पेड जीपीटी पे है तो 10, 12, 15 तक
वो कंटिन्यूटी देता है। तो मैंने इतना ही कहा, हेल्प मी ड्राफ्ट लीन स्टार्टअप बाय एरिक रीज ओवर लिंक्डइन। एक पोस्ट बनाना है विथ अ मिशन टू अवॉइड फेलियर्स वेस्टेज इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, लीन स्टार्टअप फिलोसॉफी वाज इवॉल्व्ड। मुझे ये बेस पे पूरा लिखना है। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं 2-3 पॉइंटर्स देता हूँ, तो 2-3 पॉइंटर्स दिए, तो उस तरह से इसने 3 पॉइंटर्स पे आर्टिकल बिल्ड किया। फिर मैंने कहा विजन एंड स्ट्रेटेजी और एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ये 2 पॉइंट 2 मुद्दे और जोड़ दो इस आर्टिकल में। तो उसने 2 मुद्दे जोड़ करके इसको अच्छे से बनाया। उसके बाद मैंने कहा सस्टेनिंग एंड डिसरप्टिव इनोवेशन के विषय में कुछ लिखना है, तो उसने सस्टेनिंग और डिसरप्टिव इनोवेशन को भी जोड़ दिया और एक सुंदर आर्टिकल तैयार किया। मैंने कहा कि इसमें कोहोर्ट बेस्ड वैलिडेशन, ये एक कंसेप्ट है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कस्टमर्स को जितना एडॉप्शन होगा उतना ही कोई भी सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट करना चाहिए। इस विषय पे एरिक रीज ने काफी ध्यान दिया है, तो मैंने वो भी एक पॉइंट ऐड करवाया। और उसके बाद मैंने इसको कहा कि इसको एक सुंदर फॉरवर्ड लिख के दो, तो उसने एक फॉरवर्ड भी लिख करके दिया। उसके बाद इसने अच्छे अच्छे, क्या बोलते हैं इसको, इमोजीज भी ऐड किए टू मेक द आर्टिकल्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो इस तरह से मैंने ये बढ़िया सा आर्टिकल बनाया अपने न्यूज़लेटर में पोस्ट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ द चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग कैन हैपन। I think it is already 5 o'clock, and we are almost at the end of the discussion. So ChatGPT, Perplexity, Gemini और Bing Copilot, ये 4 टूल्स आप यूज करके देखिए। इनसे बहुत सारे आपके विषयों पर आपका ग्रिप आ जाएगी। So a lot of things you will learn and you will fast track your process of education, as well as you will look smarter and efficient in your office. आप चैंपियन दिखेंगे अपने ऑफिस में और बहुत बढ़िया तरीके से आप ऑपरेट कर पाएंगे। एक अपडेट जो मुझे देना था, भारत जीपीटी इज ऑलरेडी ऑन द ट्रैक and we will be out with Recover AI, which is the Bharat GPT, Core over AI, which is going to be out very, very soon. Already the website is made, the engine is ready. So we will see Bharat GPT very soon, like what we are doing Chat GPT. रिस्क, सबसे बड़ा खतरा क्या है? रिस्क ऑफ डिफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग, गलत प्रॉम्प्ट देने से गलत आंसर आएगा। नो अप टू डेट, समटाइम्स द एआई इज नॉट अप टू डेट। जैसे चैट जीपीटी फ्री जो है 3.5, वो सितंबर 22 तक अपडेटेड है। तो आप टैक्स लॉज या कोई भी क्रिमिनल सिविल लॉज या ऐसे कोई अपडेटेड बातों के विषय में पूछोगे तो उत्तर गलत आने की संभावना है, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है और डेटा की चोरी होने की संभावना है। तो इसलिए आप पूरी अंडरस्टैंडिंग लेकर के काम कीजिए एंड डोंट अपलोड एनी इंफॉर्मेशन ऑफ एन क्लाइंट और एन ऑर्गेनाइजेशन which you feel will amount to leakage on the web. आप ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड मत कीजिए as it is on the chat GPT, because it is directly consuming it on the cloud for doing any analytics, and there are chances that the information may get leaked and people may wrong people may catch hold of this information. So please be very, very sure that before using this information, don't it should not amount to any kind of data theft. Last but not the least, lot of trainability is possible with the AI. AI से आप बहुत ज़्यादा ट्रेनेबिलिटी कर सकते हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पैसा खर्चा कर रही है। ऑल बिग फोर्स, बैंक्स, corporates, multinationals are spending huge amount of money on training the AI for their chatbots, their products, their ideas, their concepts, their business. You can see that already 4% are using and 5% are under planning. आज हमने देखा कि most of us are using। ये मेरा पीपीटी जो है या ये मेरा स्टैटिस्टिक जो है 3 से 4 महीना पुराना है। इतने दिनों में लगभग 8-9% एडॉप्शन ऑलरेडी हो गया है और बहुत कम हमारे में से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एडॉप्शन बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन द एडॉप्शन का डेप्थ जो है वो और बढ़ेगा, जैसे समय जाएगा वैसे बढ़ेगा। It is important that you don't worry about it, but you learn it, embrace it, and use it in your advantage. Don't use it for any wrong things or wrong purposes. Use it for correct things.
and maximize your career speed with the help of this system. तो कोपायलट के बारे में बात किया. अवलारा ने टैक्स रेट्स के लिए फॉरेन में यूएस में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है स्टेट वाइज क्वेश्चनिंग फॉर वेरियस टैक्सेस. कस्टम जीपीटी के बारे में हमने बात किया. लीगल असिस्टेंट्स बहुत सारे बन गए. क्वांटम लीप है, केस टेक्स्ट करके एक असिस्टेंट है which is creating lot of legal stuff and helping lot of legal professionals to do lot of work with the help of AI. टैक्स प्रिपरेशंस एआई से बहुत आसान हो गए हैं. यूएस में जो 1040 टैक्स रिटर्न है वो ऑटोमेट कर दिया है एक जो ब्लैक ओवर करके एक कंपनी ने. ऐसे इंडिया में भी अभी बहुत जल्दी हमको बहुत सारे ऑटोमेटेड टैक्स रिटर्न्स देखने को मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ एआई. जीरो टैक्स एआई ने बहुत सारा कंसल्टिंग ऑटोमेट किया है जहाँ पे आप जा करके जीरो टैक्स एआई को अपने सवाल पूछ सकते हैं यूएस टैक्स के बारे में. इंडिया में अब तक नहीं आया है. और यदि आपको पेड सपोर्ट चाहिए तो $50 में वो लोग पेड क्वेरी सॉल्विंग करते हैं. ऐसे ही टॉड एनएलपी जो टैक्स मैनुअल सीख गया है, सारे आईटीआर उसको पता है और उस आईटीआर के आधार पे वो लोगों को गाइड करता है लिटिगेशंस के लिए. टिप्सी टॉम इंडिया में ऑलरेडी आ गया है जो बहुत सारे लीगल एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, डिस्क्लोजर्स, आईपी लाइसेंसेस, ऐसे सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाता है. इंटुइट जो कि क्विक बुक्स का पेरेंट कंपनी है, they have also done a lot of work on this and they are kind of removing that BI engine, that is business intelligence engine, and plugging in the AI engine where you can ask questions to a accounting tool. मेरा sales कितना हुआ, purchase कितना हुआ, collection कितना हुआ, and it will start giving you answers. Audit risk and control के लिए audit map करके एक tool already on ground चल रहा है. अपलोड कर सकते हैं, analyze, identify, categorize, engage and export. ये सारी बातें आप इनसे कर सकते हैं. आप यदि हमारे से संपर्क में रहना चाहते हैं, मेरे से पर्सनली संपर्क में रहना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ओवर माय लिंक्डइन. हियर इज द क्यूआर कोड. यू कैन स्कैन एंड just go to my LinkedIn and connect or follow. And if you need the personal V card, that's also on the scan. That makes things easier and simpler. With this, we will close today's session. Thank you. Most of us are part of one team, and those who have joined from outside, we are very thankful for you to be nice and patient participants, and I'm sure this would have added some value and you will actually go back and try certain things on day-to-day basis and try to make excel your career and fast track your growth with the help of usage of AI in your office, in your studies, and in your day-to-day life. Thank you very much.